screen. Okay, guys. I see a couple of responses, though I'm not able to load them properly. Have decided to start soon, Kunal is saying. We can't speak. Yeah, you need to write on a chat, I know. Okay, thank you very much. So today we are going to talk about startup and entrepreneurship, and how can you do that? What are the ways of doing it? And as Nitish has introduced me already, yes, I'm a founder of MentorCard. I've been into startup and jobs for several years, almost 25 years. For last 4 5 years, I've been mentoring startups and help them to grow, help them to build, help them to scale their businesses. And then I thought about it that why not help in bigger way and build a platform called MentorCard, where many other mentors or experienced people who are there and who has the experience of building startups or otherwise, they can come and share their ideas and they can help other people as well. So that's the reason we built the platform where all other mentors also can join. So many of you would have logged into this portal through a MentorCard sign up, and there you see lot many mentors and chatting option, etc., etc. That is the whole objective is all about. So today's topic, what I've been told to cover is that being an entrepreneur, what it takes to become an entrepreneur, right? We will also talk about little about idea generation and implementation strategy, and how can you implement, how can you build a startup, right? First of all, entrepreneurship, when we talk about, it has to be a self-driven, right? It should not come under the pressure of peer or pressure of any other ecosystem, right? कि okay, if everybody is doing, तो मैं भी कर लेता हूँ, right? जैसे पहले जॉब का था ना कि we all have to want to go to computer science, you know, or other branches we have chosen. Okay, everybody is doing that because the jobs are there. You know, एक वेव सा आता है. तो ऐसे आजकल स्टार्टअप का भी है. लेकिन I would highly recommend people who should do it is who really want to do it. And we're going to talk about it. How will you find yourself a self assessment whether you are fit for being an entrepreneur or not. Quick discussion हम करेंगे. And I have a question here, that before we become an entrepreneur or before we become any bring any idea what the startup is all about, I have a question: whether technology drive business or business drive technology? And I want all of you to answer that. How can I access the chat room? Can I have this question in question answer session, please? No, acha, that is different. Okay. Can you write on a chat box, please? Technology drive business or business drive technology? The biggest difference is that we first think about technology, or we first think about the problem which we are going to solve, or business which we are going to happen. Means the user has to have a need. हम जिसके लिए बना रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस. So what should drive first? Business drive technology. Classically, it's the second one, yes. And what the technology is used for? So if business become big or want to make it big or make it scalable, technology definitely an enabler, right? So you have a e-commerce and technology enabling us to reach to everybody. You have social media, there is a need of communication. जैसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं with everybody that why Facebook exists or why LinkedIn exists? Because we as a user want to talk, want to communicate. That's why they exist. Suppose if we don't want to communicate the way it is happening today, then there's no need of that Facebook, right? Or LinkedIn. So there's a need, and that's why it is being done.
Technology helping then to reach to everyone. And that is why we say that technology is an enabler, not the driver. Okay. Now coming to what drive innovation. We all heard about it. Need. And does every invention become business? Answer is no. Correct? Because not every invention which people want to have, go to user and ask him, okay, I made this product. Would you like it? You like it? Say yes. Would you like to buy it or purchase it or pay for it? You may say no. If somebody does not pay for it, it may not become business. Correct? It will be a different game altogether then. So we have to see, as when we build a startup, that we have an idea, we have an innovation, we have an invention, or we have some process, or we have some idea which we are building, whether the people are going to pay for it. It may be different that who pays for it. It may not be all the time end user paying for it directly. Just say, for example, we have a Facebook. Do we pay directly? Answer is no. LinkedIn, do we pay directly? Answer is no. Many of the e-commerce site we don't pay. But people who are advertising on that website or on a platform, they pay to the Facebook or they pay to the LinkedIn. Correct? Indirectly, ultimately, it is costing us. But directly, we are not doing that. So when you build a startup, think about it, who is going to pay you? Whether it's third parties or directly the consumer. So are we going to be B2C, B2B, B2B2C, etc., etc.? So that model has to be very clear. So what we learned is not technology which is going to drive you, it is business which is going to drive you. Once you have business, think about it whether it's scalable and it can become large, it can reach to masses, then it's a startup. Otherwise, it's not a startup. Okay. And then on top of it, who is going to pay for it? These are the 2-3 more considerations we should do when we're trying to think about being an entrepreneur and build something on a startup side. The next thing what is important is that solve customer problem, and that's the key to success. If you're not solving any problem which is big enough, maybe that's not the right choice. Now, some people say, yeah, okay, fine. What are the entrepreneurs? What are the type of entrepreneurship, etc. So there are 4 types generally we talk about. You build a small business or you build a scalable startups. A small business can be consulting, some trading business, sales business, e-commerce, smaller one. It's not large enough, but a small business, right? Which can be from 1 to partner or building, and you are addressing particular location, particular market, etc. Or you can be large companies, or they can be social entrepreneur, right? Which are helping for society to do it. However, social entrepreneurship also need money, right? The business also need money. That business also needs money. Even if you are running a social entrepreneurship based on NGO or something, you still need money to run that. However, that's being funded by other companies and all, and CSR, etc. But money everybody needs it, right, to do any business, and they all engage in entrepreneurship. So all these 4 types of entrepreneurs. So you decide which way you want to go. Are you interested to make the startup which is big enough, or you want to make a own business? It is not necessary that everybody want to become a unicorn at the first stage, right? Or everybody want to build only a startup. It may be an idea that, okay, I have some skill, and suppose I am a digital marketing guy and I have a skill of digital marketing and I want to be only freelancer. Do it, no problem. That is also entrepreneurship, right? So you talk about entrepreneurs are engaging generally in 3-4 kind of businesses. So that's the example. Okay, so you think about where you want to go. Okay,
Now there are typically 3 stages in the startups when we talk about. Okay, the first stage is this, which is being shown here, called early stage or ideation stage, जहां पे आप सोच रहे हो कि आपको स्टार्टअप करना है. So there are 4 things which we always recommend for any person who's thinking about building a startup or doing an idea. That why you want to do that, why or why startup, answer to this question is super important, because until you do that, address that why or answer that why, you may not be able to go for long. Why? Because why is a purpose, right? So why are we doing this startup? Is it I'm doing it for social entrepreneurship, or I want to make it super big, or I want to make it a profitable company, and this, etc. So why are we going to do it? So write that and build that entrepreneurship mindset and learn about it, its journey, what is your passion, what are the risks you can take, right? Or you want to be only self-reliance guy, that's why you want to take, ठीक है मेरे को नौकरी नहीं करनी, मैं अपना बिजनेस करूंगा छोटा मोटा जो भी है, and I will earn out of it. No problem. There are in our country, 90% business is done by small businesses people, right? Only few percentage is large companies and then medium. I hope you all understand what is called a small and medium business enterprises, called SME, or MSME, micro is small medium enterprises, and then the startup comes. However, the startup also now coming under MSME schemes. The second thing is that once you decide the why part of it, that why you want to do it, what is the purpose behind it, you go and validate. जो मेरा idea है उसको मैं validate कर लूं कि whether it's needed in the market or not, whether my customer or target customer would like to use my product or service and pay for it if it is a commercial startup. So what you do for that? You do research, you do survey, you do pilot, you with the real user, and then take a feedback, right? And then post that validation, you go and incubate yourself. And you have official incubators and an accelerator provided by the colleges and the government bodies, and you join one of them because they help you to take it further. And then you may raise small fund also, or may not raise fund at all at this stage. It's completely up to you, depending upon your condition of the financial thing, and you bootstrap. Or you may raise some friend, family, पैसा लेके, friend से, family से, seed investment लेके या angel investment लेके stage पे करते हैं, right? That's how you do it. This is the early stage. Now coming to the next stage, which is MVP, जहाँ पे आप minimum viable product. Suppose you're building any hardware device, or you're building any software, or you're building any portal, whatever it is. So for that you are making a minimum viable product, means ऐसा एक minimum product जिसमें minimum feature जो आप launch करना चाहते हो, that you make as a prototype. Correct? And then you create that MVP. And then you learn, okay, what the MVP looks like, what are the feature minimum I'm going to build it, what is the differentiation in the market I'm going to create, and I want to do with the pilot user, a pilot test it and everything. And then if that also works, then I also think about in parallel, in fact, of building a team along with me. See, if I'm a founder, suppose single solo founder, then I would like to have co-founder, or maybe I'm with co-founder, I would like to have more team member part of this team, so that we can take it forward. Third is that once that is done, then I take it, okay, fine, this is the early traction, and then I build a company or register a company and work on that area. Also learn in this process about Startup India, its policies, its procedure, government policies, so that you can get help from the various authorities to build your business. Then the next is called early traction, which is like growth stage or early traction stage, जहाँ पे आप एक प्रोडक्ट बनाते हो जो अल्टीमेटली मार्केट में जाएगा.
तो अभी तो आपने एमवीपी बनाया था, नाउ यू आर मेकिंग अ कंप्लीट फुल प्रोडक्ट जहाँ पे ट्रांजेक्शन होगी, यूजर कम्युनिकेट करेगा, यूजर प्रोडक्ट को यूज करेगा, पे भी करेगा उसके लिए, राइट, इन दिस स्टेज. And that's how you build it. So you build the product which is market fit, then acquiring early customers, right? And then maybe building some intellectual property, which is IP, create some brand strategy, create some partnership, reseller strategy, bringing more companies together, collaborate with them, right? And how to pitch to investors at growth stage also you should learn. In any business you do, see if there is a use of AI which can help your business to grow. Always you should, I highly recommend that we should all explore AI. So yeah, we talk about entrepreneurship, we talk about a startup, but there are some reasons which people should also see. The top reasons that you should not become entrepreneur at all. We all talk about why you should become entrepreneur. I want to say that let's look at also the perspective that why we should not become entrepreneur. In this journey, you may have a lack of a steady income, right? And if you say no, मेरे को तो महीने का इतना पैसा अभी चाहिए, तभी मैं कुछ करूंगा, तो placement is better, job is better, not the entrepreneurship. Early stage, okay? When you build the business, obviously there will be consistent money and maybe more money, right? In the job तो आपको एक limited पैसा ही मिलता है, right? And every time you grow few x maybe, right? And few percentage, 10%, 20% every year. Or if you jump the company one to another, maybe you get 40%. And when you grow to a particular level, obviously you grow to 100% also. But in entrepreneurship, the money is unlimited over the period of time. Lack of motivation. Some people are there जिनको बार बार मोटिवेशन चाहिए होती है, external motivation, right? Internal is fine. If you are able to do yourself, keep yourself motivated, nothing like it. Entrepreneurship is job for you. Entrepreneurship or entrepreneur who does, he should not expect more motivation from outside. Rather, you will be discouraged. People will say, "Kaha, tum kyun kar rahe ho ye sab?" You know, why you should not do that. And you will get many people, 99% people giving you negative advice, right? Or if you cannot handle stress, right? That okay, you know, I cannot handle that kind of pressure what entrepreneur have every day. One very important point is if you are a perfectionist. मतलब कि product, nothing called MVP. I want to make a perfect product and then only I am going to go to the market. तो फिर तो नहीं हो पाएगा, because वो perfect कभी बनेगा नहीं. So any product which is being launched in the market, if you really see early stage पे जब करते हैं ना, beta stage पे and all that stage पे, I always say to the people that 20% is when your product is ready, you launch it for a pilot. And 80% of the product is built by the user experience and feedback. And all the big products, all the big brands which you use today have followed the same thing. Imagine a Facebook, look at the Google it and find out how Facebook used to look like several years back when they launched. It was not at all meant for the purpose even today what is sending. It was only for community and all that, right? So imagine the product get changed over the period of time based on the customer response and feedback. And that's better also. Because अगर आपने पूरा प्रोडक्ट बना दिया अपनी सोच पे, तो आपने अपनी सोच से बनाया है, कस्टमर के फीडबैक से नहीं, तो वो यूज नहीं करेगा, राइट? सो रिमेंबर, इफ यू आर अ परफेक्शनिस्ट, बी केयरफुल. If you are not a forward thinker, means today what you are doing, and if you are not able to think 3 years down the line, is hard, very hard, right? And if you can't handle criticism, everybody will criticize you for what you are doing. Even today, you might have heard so much of social media, right? So many big entrepreneurs are being criticized for unnecessary reasons, right? But अगर आप देखें तो लोग टाटास को भी करते हैं, अंबानीस को भी करते हैं, अदानीस को भी करते हैं, फ्लिपकार्ट को भी करते हैं, सबको क्रिटिसाइज करते हैं.
right? But are they going to stop? They're creating so much of employment. We all go there and do jobs, make high packages, address their needs, etc. Right? They're taking country forward, whatever it is, right? So remember, if you are an entrepreneur, you have to focus on your job and do not worry about criticism. But yes, the positive feedback, and you should rather take things positively and take the feedback and take it forward. If you are not a number person, number doesn't drive you. If I have achieved 5, I need to go 10, I need to go 20, I want to eat for 100, then 200 and 1000 and 2000 and 10x, 10x, 5x, 100x. जब तक आपको ये चीजें ड्राइव नहीं करती है, मैट्रिक्स ड्राइव नहीं करती है ना, तो you should not think about it. If you can't take risk, यार अगर फेल हो गए तो क्या होगा, यार मैं तो नहीं करता, so such kind of people stay away from this. Rather, if you can do, say यार होगा, फेल भी होगा, हो सकता है पहला स्टार्टअप भी फेल हो जाए, दूसरा भी फेल हो जाए, तीसरा भी फेल हो जाए, you never know, right? And but I am going to do it because success comes at once, right? And you learn from lot from your mistakes all the time. If you can't bear losses, अगर आपको लगता है आपका अगर 100 रुपए का नोट गिर जाए आज पॉकेट में से, या गुम जाए, या 10 रुपए का नोट गुम जाए, और आपको रात को नींद नहीं आती है, it means you can't bear losses, right? So remember, entrepreneur में ये रोज होगा, right? So this you need to remember that. What are the 7 steps to become an entrepreneur? Finding the right business, right idea. Determine if you should get an education, learn about it. Okay? Plan your business. Find your target audience, target customer. Which is the target market? Who is your direct customer whom you want to address? Create your network. Means that meet people, interact with them, business relationship बनाइए, उनके साथ बैठ के बात करिए, interact करिए ideas, and your network will build over the period of time, right? In the market. Successful entrepreneurs are self-motivated, as I said, and this is one of the important traits, okay? Understand what you offer as entrepreneur. You need to know what you offer and how it fits into the market. Take risk, know how network, again, same 7 characteristics are there. Flexible and passionate about what you're doing. So are you ready to launch? Move to the next level? Yes or no? Yes? Who still think that they can do it? Kunal is super excited. Udyan, yes. And you feel that all of these things are there, huh? Hey, kar lenge hum. We will take questions soon. Huh? Let me finish few part and then we'll take questions. But you can type here, huh? By the way. Great. And we will interact a lot. Don't worry. So and we will call you in a panel so that you can share your, thoughts, and you can talk and you can speak. Don't worry about that. We will make it interactive. So if you are yes, anyway, even if you are no, think about it. How can you do that? You can't give up so easily, huh? Because of one presentation. That's what is important. If you've decided, you have to decide and go ahead. So time to ask yourself following questions. What pain point are you trying to solve? Who are you solving it for? Pain point means problem. Who are you solving with? Means customer. Who is your customer? Identify them. How are you trying to solve it? What is the solution you are bringing it? Is anyone else doing it? Study your competition. Can you do it differently from them? It can create USP for you. Can you change your customer and how much? Can you charge your customer and how much? So who is your customer? Who's going to pay and how much you're going to charge for it? That is the 6 points you need to ask if you decided to be an entrepreneur, and then think forward. कि क्या करेंगे वो अलग बात है, but this is how you to structure your thoughts. This slide, remember when you're doing it. Customer does not bother what technology you use.
Do you bother what Facebook does and what technology or what code you use, what database they use? Don't bother about it, right? आपको functionality से मतलब है as a customer. So customer don't care about your technology. It should work for them. It should help them. It should address their problem. It should address their need. And there's a difference between problem and a need, right? Problems are like, for example, you're solving some sales problem. You're solving some accounting issues. You're solving some health issues. And problems generally are related to B2B as such. Well, need when you talk about is like, for example, everybody needs entertainment. So big need market is always very big, right? I want to communicate like Facebook. I want entertainment like Netflix, Amazon, OTT, all kind of platforms. So idea whatever you have for a business, see and put them in a bucket, whether you are solving a problem or you are addressing the need. If you're addressing the need, it has a right status for moving to the startup area. If you're solving a problem, then see how big problem you are solving, whether it's scalable or it's for particular very narrow audience, right? And then decide on that. So remember, market of need is always huge and solving a problem. So what pain are you solving and what gain are you creating? These are the two things which you need to remember when you build your business. In general, any business when you build, that's the kind of implementation model you need to structure. When you build your company, put the core values to it. Why are you doing this business, right? Forever, they're going to stay. Define your why, which is life of leader, means the founder, why is he doing it? वही पूरे business को आगे तक drive करेगा, because that has a purpose defined to it. Set your 3 to 5 year target, where you want to reach. Set your goals. What are the things you want to do annually? How you want to do it as an action quarterly. When you want to do it, schedule it weekly. And make it responsible and accountable for a particular person or particular entity. This is how any implementation model or strategy has to work. And that will create a strong foundation like a pyramid, which cannot be shaken. Okay. Coming to mentoring, remember, आप जो कर रहे हो, अभी आप first time कर रहे हो, you don't have any experience. So obviously you need to have some advisor, mentor, or multiple people who are helping you. For that, mentor card can help, and you can come there, you can ask your questions, and you get responses from the mentor, because they'll help you to create knowledge, information, connectivity. They'll help you to realize your potential. They are your trusted advisor because they have done it in the past. You know, all that benefits will come. You can always learn from big entrepreneurs or big mentors also, जिनको आप personally नहीं मिल पाते हो, but आप उनको videos में देखते हो, उनके webinar attend करते हो, right? Mentor can't help you to do hand holding, जहाँ पे आप सीधा बात कर सकते हो, and that is the difference. So what are your first step and next step? So if you want to be successful, happy or wealthy or healthy, there are few tips for you, and after that I'll take question answer session. These are the 6 mantras I ask everybody to do it, whether you do entrepreneurship or you do a job or you do your own self freelancing work, whatever you do in your life. If your purpose and meaning alignment you have done and you have set your motive before doing anything, that's the first mantra, that set the motive. Otherwise क्या होएगा? It's like situation where you're coming out of the home, you're going outside and somebody asks you, hey, where are you going? I don't know. Let me see where do I go today. Is that the answer you want to give for your career or inspiration? No. So define your motive. Where are you going every day? What is that you want to achieve in a longer term, short term, medium term? That will set the purpose for you. And then be flexible also. While you are going to achieve that purpose,
you will have to be malleable and you'll have to be flexible, because at times situation will come where you might have to change or pivot your plans. And if you're not flexible, you're too rigid, what will happen? You may fail. Build your resilience and inner strength means that to fight against any negativity, any criticism, anything, build your inner strength. Learn how to communicate the thing what you want to do and how you want to do in a better way. आप अपने आप को अगर communicate नहीं करेंगे, marketing नहीं करेंगे अपनी खुद की, and then you will bound to fail. And build the excellent execution model जो मैंने आपको बताया, pyramid kind of thing should build. And always get yourself mentored. Always ask your questions and do it. Okay, that's what MentorCard does. You might have seen all these screens already because you signed up there, and I'm just showing one screen where you say ask a mentor, and you can ask question here and the mentors respond to you. And this particular service is free. Rest you can view a lot of free videos, content, etc. Or you can join programs which are paid. Correct? Now there are, you might have seen this slide earlier. These are the 10 skills in 2020 to 2025 the World Economic Forum has recommended everybody to have to get highly placed or do entrepreneurship. That you should know how to solve problems, complex problem solving skills, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, negotiation, and cognitive flexibility. Read about these skills. If you have not done it, learn about them, and MentorCard also have lot many videos inside you can watch. Thank you, and now I'm going to take the question and answers. Thank you so much, sir, for this insightful session. And I think that right now, ladies and gentlemen, you can ask any particular question that you have in your mind. You can ask it in the chat box. And also, sir, I think right now you're the host, so you can make my video on. Right now, you have the right. Okay, finally. Yes, sir. And also the most important thing that I have understood is that when we start our journey towards entrepreneurship, if we are thinking that what we should be doing, what we should not be doing, the most important thing is that what are the things that we should not do? I think that you have covered that who should not become an entrepreneur. And I think that that is something which is very important. And a person who has so much of experience, the person can only tell us that what you should not do and who should not become an entrepreneur, because you have seen so many mentees, you have mentored so many mentees. So I think that that insight is absolutely fantastic. And ladies and gentlemen, I'm pretty sure that you can relate yourself that what are the things that you do, what are the things that you feel about. Let me know. Raise your hand. Sorry, raise your hand. Who want to ask question? I will bring him in the panel. And Nitish, I'm also facing the same problem. I don't know why, but that I'm not able to upgrade your video. वो option नहीं आ रहा. Maybe we'll have to research little more and then find out. Yes, sir. Okay. No problem. So who is raising the hand right now? Kunal? Yeah, I have allowed you to talk. Yeah. Hi, Ashish sir. Hi, Nitish. Hi, everyone. Am I audible? Yes. Okay. So I had this question. Last 4-5 months, I've been thinking of starting up. I mean, it's been also I am working in a consulting industry, and I have been looking for my wife for starting up. I mean, I wanted something which has a social value or environmental value, but it all seems to be because a lot of information flux and a lot of options, so you get very bogged down by so much information going on around in your head. So I was of the view that can we start first a side hustle and then
get into that action mode, and will that help to get clarity in terms What of is your current, where Kunal, what is your current background? What are you doing right now? so I am a senior consultant. I provide business advisory services for profit maximization, cost optimization, like that, in And supply chain. you're independent consultant? No, I'm working with one of these consulting organizations based out of Okay. Gurgaon. So anybody who is working right now in the working profession and you want to be an entrepreneur, yes, you should. I suggest build something along with wife or whatever partner you can have, and build some business in sideline first, whatever you want to do. And I highly recommend that if you start making some revenue, even if just trying an idea and people are ready to pay you, once you realize and validate that, then only you switch. It will Okay. it will make you a risk mitigation in terms of suppose it doesn't work, right? So test the idea, and test the ideas with real user is good, right? Right. Right. Yeah, Yeah. I also recommend. एक और benchmark है, मैं generally बोलता हूँ, but it may not be true all the time, that once you Okay. start making 1/3 of your salary what you're getting today from your sideline business, then Yeah. go to full time. Okay. Okay. That is Yeah. also one formula people use it. Right. Okay, Thank you. please go ahead if you have more questions. Udayan. Yes, you can Very good unmute yourself and speak. Yes, Yes, sir. Am I audible? yes, you are. Yes, sir. Very good afternoon to you, sir. My question is, what should we consider while building a team for a project or startup or anything? Because what I feel like and what I've seen कि कई लोग start तो करते हैं आपस में साथ में कि हाँ ठीक है, I'll do this task, I'll do this task. But Right. over the period of time, even if we are getting a few amount of success या फिर कुछ orders आ रहे हैं, फिर कुछ भी हो रहा है, बट पीपल टेंड टू क्विट, या फिर एक होता है अंदर से ही कि यार नहीं करना. और पर्सनली आई डोंट फील कि इसका कोई रीजन होता है. इट जस्ट कि लोग बोर हो जाते हैं. तो ये चीज स्टार्टिंग से कैसे अवॉइड कर सकते, लाइक व्हाट आर द क्वालिटीज यू लुक फॉर पर्सन while building a team? There are a couple of things one has to take care. First is always have a complementing skill. Means suppose you are building a startup and you are a marketing guy, okay, and you need technology as a CTO or co-founder. You need a technology guy because you need to build a product on technology. So always have a complementing skill for a founder first of all. So multiple founder, if you are there, have complementing skills. It should not be that multiple founders are there, but all are from marketing, all are from this, so that is also one problem, and that's become over the period of time becomes issue of conflict. Okay, aap kuch bologe, wo kuch bolega, and then there will be conflict. So that is you should avoid. Second thing is, as far as the ultimate डिसीजन मेकिंग इज विद द इंडिविजुअल. हो सकता है कि शुरू में बहुत इंटरेस्ट आया और बाद में वो इंटरेस्ट ड्राई डाउन हो गया, but your startup has to continue. Suppose your interest and other people's interest is still there and you are pushing for it. Because of one person, not everybody can go down, correct? So what you need to begin, when you begin the startup, at that point of time the agreement and all has to be phased in this way, that we all will invest minimum this much of time into the startup. We say minimum 4 years or 5 years, okay, and every year whatever stock and equity we share, every year the proportion में वो issue होगा, so that tomorrow even if somebody exit at 3rd year or 4th year, whatever work he has done उतना उसको compensate हो, जो नहीं किया तो फिर नहीं किया. So initially you will have to build that those understanding, that जैसे आपने मुझसे पूछा कि दैट कल के दिन बोर हो गए तो क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन पहले आ जाना चाहिए जब आप टीम बिल्ड कर रहे हैं. आस्क एवरीबॉडी, सिट एवरीबॉडी एंड डिस्कस. ठीक है, हम लोग सब तैयार हैं काम करने के लिए, कल के दिन कुछ इशू होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ एग्रीमेंट वी शुड हैव.
somebody will say यार ठीक है अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं तुम लोगों को अगर मैं साथ नहीं दूंगा because of XYZ reason, तो I have no right to claim anything and I will leave it. Okay, put that in agreement. Getting me? So structure all those things. थर्ड, बिफोर वो सिचुएशन ना आए उसके लिए पहला असेसमेंट यही है कि बहुत बार डिस्कशन करो, इन्वॉल्व करो, थोड़े दिनों काम करो साथ में. वंस यू नो कि हाँ यही आइडिया सही है, बार बार अपने आप को चैलेंज करो शुरू के फ्यू मंथ में, फ्यू क्वार्टर में, कि ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है, सही जा रहा है नहीं जा रहा है, तो वो करके फिर फाइनल करो और फिर आप उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट्स लगाओ. वैलिडेशन में जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी उतना ही ज्यादा होगा. अगर वैलिडेशन में कम टाइम लगाया और जल्दी 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 में करते चले गए तो सब कुछ बिखर सकता है, आइडिया भी, बिजनेस भी और टीम भी. Yes sir, thank you. राइट? ओके. अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन. ये मैं ऐसे जनरली पूछना चाहता हूँ कि what are the myths, या फिर myths को हटा भी दे तो ऐसी क्या गलतियां लगती है आपको, मिस्टेक्स, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर से सिचुएटेड है, लाइक क्योंकि आपने देखा होगा कई लोगों को वाइल मेंटरिंग भी कि उनका एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर या स्टार्टअप को लेकर टेक ही कुछ और होता है. तो ऐसी क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको लगता है कि हाँ ये लोग कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छी यील्ड दे पाएंगे या फिर इनके प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल होंगे या फिर थिंग्स विल गो ऑन अ राइट ट्रैक? देखो सबसे बड़ी चीज तो है दैट पीपल अज्यूम एवरीथिंग इन देयर ओन वे. तो मैं फाउंडर्स को हमेशा बोलता हूँ कि सब कुछ एजम्पशंस पे मत चलाओ. एवरीथिंग इज नॉट एक्सेल सीट इन देयर लाइफ, राइट? द रियलिटीज आर डिफरेंट. सो पहली मिस्टेक तो ये नहीं करनी चाहिए कि टू मेनी एजम्पशंस पे अपने बिजनेस को नहीं खड़ा करना चाहिए. मींस वैलिडेशन हैज टू बी स्ट्रांग. सेकंड इज द मिस्टेक व्हाट पीपल डू, दैट आई नो एवरीथिंग, मेरे को तो समझ में आ गया और मैं कर लूंगा. एंड वी डोंट फॉलो एडवाइस और फीडबैक फ्रॉम वेरियस पीपल व्हेन इट कम अक्रॉस. जब भी कोई फीडबैक आता है, इंस्टेड ऑफ टर्निंग डाउन जस्ट लाइक दैट, do a deep thinking and then make it yes or no. Okay, and then you will learn in that process. Third, related to investment, बहुत मिथ है कि मैं बस पीपीटी लेके जाऊंगा और मैं आइडिया दिखाऊंगा और मुझे कोई पैसे दे देगा. ये कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा. और बहुत लॉन्ग टर्म में जाके लोग सीखते हैं और उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर चुके होते हैं. आपको अपनी इस गेम, अपनी स्किन गेम में लगानी पड़ेगी. थोड़ा सा आपको भी अपनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट्स को करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ थोड़ा ही हो. पर जब तक आपकी स्किन में गेम में नहीं होगी तो इन्वेस्टर आपको उतना मिडिस नहीं देगा. आइडिया तो 10 लोग लगे घूमते हैं. आइडिया हैविंग आइडिया इज नॉट अ वैलिडेशन दैट इट विल वर्क. करेक्ट? सो इट हैज टू मेक इट वर्क. तो आपको पीपीटी से हटके ग्राउंड रियलिटी में आप क्या बिजनेस में कर सकते हो, क्या यूएसपी क्रिएट कर सकते हो, कितना बड़ा कर सकते हो, आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा. यानी कुछ अर्ली ट्रैक्शन लाना पड़ेगा, कुछ एमवीपी बनाना पड़ेगा. और यहाँ पे मिस्टेक करते हैं लोग. थर्ड, जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, बड़े बड़े वैल्यूएशन हम लोग पोजीशन कर देते हैं. हम इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं जीतने जाते, हम उनसे पैसा मांगने जाते हैं. एंड दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन. What we should be pitching for investor is to take a feedback more than the money. Once you continue to get the feedback and then you're able to come out with the MVP, money will come, it will follow. And believe in building relationships, then only asking for funding. Funding will come over the period of time. But if you meet one investor once, does not mean that's the end of it, even if he says no. Continue to update him, continue to be in the, I have raised multiple funds in my life. Okay, when I did a startup in US, I raised, and I did exit in 2020 after working for 4 years of that startup, and it was a US based startup. Then India में mentor card हमने बनाया, यहाँ पे भी हमने fund raise किया और अभी भी कर रहे हैं. This all come because of the relationships you build. The investor will continue, make investor follow you, that
हाउ यू आर डूइंग, यू आर प्रेजेंटेड मी, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा. You have to continue to feed that information. One day he will realize and you will also be in sync. He will know कि हाँ आप सीरियस हो. अब खुद सोचो ना कितने लोग बिजनेस करने आते हैं. मैंने आप पहली बार आए, मालूम मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने आपको पैसे दे दिए और 4 महीने आप बोले सर वो चल नहीं रहा, सर वो मेरा पार्टनर बोल रहा है होगा नहीं, वो छोड़ के चला गया, मेरा 10 लाख रुपए डूब गया. समझ रहे हो ना? Yes. ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा इन्वेस्टर को? ऐसा नहीं होगा जब तक आप उसके टच में नहीं रहोगे, जब तक आप जब वो ये देख लेता कि यार आपके पास पैसा हो या ना हो, आपने तो सोच लिया ये करने का और आप लगे पड़े हो, जो गिर रहे हो, मर रहे हो, भूखों मर रहे हो, लेकिन लगे पड़े हो उसके. जब तक वो आपके अंदर ये पैशन और जल नहीं देखेगा ना, तो 1 रुपया नहीं डालेगा. क्लियर है? एंड फोर्थ इज people think that they form the company, they have an idea, they're doing it, they become a startup and they are entrepreneur. No, you have to create your own, build network बनाओ, एक्सेलरेटर पे जाओ, इंक्यूबेटर पे जाओ, इन्वेस्टर से मिलो. अगर 3 फाउंडर हो तो एक फोकस करो इसी काम के ऊपर. जो सीईओ है ना उसको यही करना चाहिए, बाकी सबको अपना टेक्निकल मार्केटिंग वो सब बिल्ड करना चाहिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट बिल्ड रिलेशनशिप इट इज, आप खुद नहीं किसी को 1 लाख रुपए दे दोगे आपके पास होगा तो, जब तक आप उससे 50 बार आप देख नहीं लोगे कि हाँ ये सही जगह जाएगा. करेक्ट? सो इसलिए learn that part and these are some mistakes people do. There are hundreds of things but I just want to share a couple of these. Yes. सर वन लास्ट क्वेश्चन. एक चीज बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि यार मैं तो मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, जो आपस में स्टूडेंट्स बोलते हैं या फिर मेरे जो फ्रेंड्स जो अभी कर भी रहे हैं बिजनेस अपना, वो भी बोलते थे कि यार मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, ठीक है ना, मैं घर से ले सकता हूँ, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है, बट आई रियली वांट टू परस्यू दिस, बट यार सब कुछ तो पैसे से ही चलता है. और कहीं ना कहीं यू आल्सो मेंशन कि एट द बिगनिंग यू आर द वन हु नीड टू इन्वेस्ट. अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे टाइम की भी आती है जो कि XYZ% देने को तैयार है, बट व्हेन इट कम टू मनी वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है. तो क्या ये मिथ है या फिर इट डिपेंड्स ऑन द स्टार्टअप या फिर आपका प्रोडक्ट कि हाँ तुम्हें जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, सॉर्ट ऑफ? नहीं, मिथ नहीं है. मनी इज नेवर अ मिथ. अगर किसी चीज के लिए पैसे चाहिए तो चाहिए, राइट? हाँ सर, डेफिनेटली. आप उसको अरेंज करने के लिए 100 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सोर्सेस हो सकते हैं. बिल्कुल. मैंने ऐसे भी फाउंडर्स देखे हैं जिनको इन्वेस्टर पैसा देने को तैयार है, उसको चाहिए भी, लेकिन नहीं सर 5 मिलियन का वैल्यूएशन, 2 मिलियन का. अरे भाई अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है. वो अभी जो आपको दे रहा है आप उसमें कंडीशन डलवा के आगे बढ़िए. शो द बेंचमार्क. सो द नेगोशिएशन स्किल्स भी होने चाहिए. मैंने कहीं स्लाइड में लिखा भी था. मैंने Yes, देखा है yes, कि yes, फाउंडर्स sir. को कई बार नेगोशिएशन में भी फेल हो जाते हैं. तो इसलिए मैं बोलता हूं कि मिथ नहीं है. अरेंज अगर किसी चीज के लिए चाहिए, सोशल काज के लिए भी कई बार पैसे चाहिए होते हैं, तो चाहिए होते हैं, राइट? बिल्कुल सर. उसको आपको अरेंज करने की ट्रिक्स और अरेंज करने की फाइंड आउट द वे एंड देन डू इट. हाँ ये है, कई बार चीजें बार्टर से भी हो जाती है, कई बार लोग बार्टर डील भी करते हैं, राइट? इसलिए मैं कह रहा हूँ देयर आर 100 वेज ऑफ डूइंग. एंड इसलिए कहता हूँ कि मेंटर्स अगर साथ, अभी मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में हो, देन इन इफ यू हैव अ मेंटर एट एवरी स्टेज जिसको आप साउंडिंग बोर्ड की तरह यूज कर सकते हो, आपको उस सिचुएशन के बारे में सॉल्यूशंस देगा, आपको रास्ते दिखाएगा. आप ऐसा करो, चलो इससे बात करो, उससे बात करो, ये करो, ये कहो, ये सॉल्यूशन लेके जाओ. उनको बोलो अच्छा ऐसे प्रपोज करता हूँ, ठीक है सर आप अभी पैसे नहीं दे सकते, बट आप मुझे बताओ मैं आपका ये करके दूंगा, मेरा इतना करा दीजिए, चलिए मेरा MVP बनाने लायक पैसे दे दीजिए मेरे को, या इतना फंड कर दीजिए, चलिए आप मेरे को डेट ही दे दीजिए, अगर नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी तो. सो यू विल हैव टू, अगर आपने सोच लिया कि करना है तो आपको उसके 10 तरीके मिल जाएंगे. मेंटर है तो और अच्छा है, क्योंकि वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारे रास्ते दिखा सकता है. डेफिनेटली सर. थैंक यू सो मच. these were the few questions जो मुझे लगा कि नॉट ओनली मेरे लिए बट
कई लोगों के लिए अर्ली स्टेज पे ये सारे डाउट होते हैं. Sure. So thank you so much for clearing them, sir. No problem. Keep in touch with me on the MentorCard app पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. You can work and continue to attend my sessions. So बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं. उसके अंदर आप देखेंगे बहुत सारे लाइव सेशंस पहले भी हो चुके हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पड़ी हुई हैं. बहुत सारे सेशन हर हफ्ते होते हैं. Attend them and ask questions. Sure, और sir. एक और चीज, फाउंडर का आदत होना चाहिए. Ask so many questions. Seek for help कि मुझे हेल्प चाहिए. और अगर अपने में ही आप गूगल सर्च करके लगे रहोगे तो कुछ नहीं होगा. Yeah. Yes, sir. Yes, sir, absolutely. Yes, thank you, Dan. Thank And you. sir, I think now is the time that we are going to proceed with our next session as well. So before moving forward, sir, can you please make me the host so that I can also add Mr. Saurabh Trivedi in the session as well? Yeah. Let me just make you host. Yeah, and most importantly, thank you so much, sir, for such insights. And I'm pretty sure that, ladies and gentlemen, you have got a great insight from Mr. Ashish Khare. And yes, now is the time that I think we still have got one question. Sir, would you like to answer the last question? Yeah, sure. Where is the question? So the question is, sir, how to showcase our ideas in order that they are not sealed by others in team building process? Okay. So ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. And there is always a lot of myth in terms of that idea steal हो गया and all that. आजकल कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ स्टील हो जाए. अगर बहुत ही टेक्निकल है और बहुत ही वैसा है तो आप अपना आईपी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनडीए साइन कर सकते हैं. अभी जो नेक्स्ट मेंटर हैं वो आपको आईपी के बारे में बता देंगे. यू कैन आस्क मिस्टर सौरभ त्रिवेदी हाउ टू प्रोटेक्ट योर आइडियाज फ्रॉम स्टीलिंग इट. बट to be honest, the ideas which are there, as much as you discuss, they will become better and better. The myth is कि वो steal हो जाएगा. वो steal कुछ नहीं होता है, क्योंकि you can copy idea, but you cannot copy execution. And execution is everything. है ना, आइडिया तो सबके पास है. रास्ते चलते पूछ दो, हाँ भाई बिजनेस करेगा, हाँ सर 4 आइडिया है मेरे पास. राइट. तो उससे कुछ नहीं होता है. हाँ, अगर वाकई में कुछ बहुत सारा अच्छा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो सौरभ सर आपको बता देंगे कि यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट इट. ओके, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for your time, and thank you so much for all the insights that you have given to us. Thank you so much. It was wonderful to have you. And ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. Ashish Khare for such insightful session. Thank you so much, sir. Thank you. All right, ladies and gentlemen, boys and girls. So, Arsh, the question that you have asked, which is absolutely, I can say that on time. And this question is definitely going to be answered by Mr. Saurabh Trivedi as well, because, ladies and gentlemen, Mr. Saurabh Trivedi is legally advising so many startups, and he is he is an expert in intellectual property, and he is also an expert in patents and copyrights filing and all. I'm pretty sure that you are going to get so many insights that if you are a person who wants to build something, that you want to file a copyright, you want to file a patent, what you should do, what are the mistakes you should avoid, and how you should proceed with your idea or your business model or whatever it is. I'm pretty sure that you're going to get all the insights in this particular session. So without further ado, ladies and gentlemen, let me take this privilege to acknowledge our esteemed guest speaker, Mr. Saurabh Trivedi. He is the co-founder and director at Bodhik Ventures. He's an investor, he's a mentor, he's a speaker, he's a community builder, and yes, most importantly, he is an expert in the intellectual property rights. So ladies and gentlemen, without further ado, please give a round of applause and welcome Mr. Saurabh Trivedi. Very good evening, sir, and welcome to the session. Good evening, Nitish. Good evening. And thanks a lot for organizing this wonderful session. I'm not able to start my video because I think this has been disabled by the host. So yes, sir, exactly. This is the problem that we're facing. I have to make you the host to let you turn on your video. So let me just make it, sure. Try it, and you can continue with the same. It will be okay. Sure. So now I have, what you can say, listen, Mr. Ashish as well.
pretty much very interested question asked by one of the from the audience, and they asked for the idea steal kar lete hain regarding that. So I picked it from there, and definitely start my session by using all the terms which has been pretty much used in this startup ecosystem. And this is wonderful, particularly probably the initiative by the Mentor Card, where they have invited lots of mentors and guiding or sharing their knowledge, experience by taking other mentors on the same platform and giving the insights to the entrepreneurs, budding entrepreneurs. So it's a wonderful initiative taken by the Mentor Card. And I really thankful for Entrepreneurship Development Cell of Maharaja Agrawal Institute of Technology. So it's a good opportunity for the persons who wish to become entrepreneur and they want to start their own journey. So now I think I'm not able to start this video. You have to make him host completely. And Yes, sir. आशीष जी अभी भी आप हैं? मैं मेरे को लगा कि कोई कह रहा है कि घोस्ट बना दीजिए. Just kidding. I'm here. I'm very well here. Wonderful. Thank you very much for joining today. Thanks a lot, Ashish. So now I think Yes, sir, I'm able to. Yes, sir, now you're the host of the session. Lovely. So hello to all, and again I already given many thanks to Mentor Card to organize this wonderful session with the partnership of with EDC. So it's a wonderful thing. So now when we talk about this startup entrepreneurship और ये बहुत सारी चीजें जो ecosystem में चलती आई हैं, because there are lots of audience from the college, universities, और जो अपने आप में कुछ करना चाहते हैं और जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, but there are lots of struggles faced by them or challenges or maybe some kind of myth or lack of awareness or do not have a right mentor with them. So ये सारी जो चीजें होती है ना, इनमें ना एक एंटरप्रेन्योर और बडिंग एंटरप्रेन्योर उलझ जाता है और they are not able to solve the problem, or might be they can join some companies and start रेगुलर टास्क करने लग जाता है, वर्क करने लग जाता है, बट उसके जो अंदर की पैशन होती है, जील होती है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, वो किल होती चली जाती है. So the right time when we talk about when 2015 PMO announced this Startup India और Make in India, वो इसलिए अनाउंस किया गया है कि इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है और बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे स्किल सेट्स है. सो बंदों को प्रमोट करने के लिए, उनका मोरल बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि वो कुछ एंटरप्रेन्योरशिप even just I think last year they announced about Atmanirbhar Bharat, because they want to promote it कि आप अपने पैशन को अलाइव रखो, अपने काम को खुद कर सको और कुछ अर्न कर सको, कुछ क्रेडिबल. आप कहते हैं ना कि आप जॉब सीकर ना बनकर आप जॉब गिवर बन जाओ, आप लोग जॉब प्रोवाइड करने लग जाओ. तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग. और नाउ जब आते हैं ये सारी प्रॉब्लम्स से सुलझने के लिए और इनके सॉल्यूशंस क्या हैं, तब हम लोग बात करते हैं इन सेशंस की और उस एक्सपीरियंस की जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. और जितने भी एंटरप्रेन्योर, आपने हर एक सेशन में सुना होगा, अभी आशीष जी बात कर रहे थे कि हम लोग ना उन एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट देते हैं लोगों को कि कम से कम ना वो गलतियां ना करना जो हमने करी थी, बिकॉज हम उस एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं. तो हम आपको वो वाली चीजें जरूर बता सकते हैं जो हमने कर लिया है, बट जो नई प्रॉब्लम्स आएगी डेफिनेटली वी बोथ कैन एक्सचेंज. और मेंटोर जो होता है ना, वो एक बहुत राइट पर्सन होता है जो आपकी चीजों को टैकल कर सकता है, आपके साथ सॉल्व कर सकता है उन चीजों को. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. लास्ट टाइम मैं जब भी सुनता हूँ एक गुरु ना बहुत जरूरी है. अभी आप कॉलेज में हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो से भी आपको एक गुरु ही पढ़ा रहा है. तो आपके पास theoretical knowledge आ गई. Now you just wanted to implement this theoretical knowledge in your practical life and want to become an entrepreneur, then you need couple of people from industry like Ashish ji हैं, already being associated with good number of people. Network बहुत strong है because he's going to touch base in couple of good companies where जहां पर आप लोगों को लगता है कि हमें अगला डॉट नहीं मिल रहा, what exactly the next step which we are going to take, then I think the mentor is the person who is just guiding you कि आप ना नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, आप सेल्स में लैग कर रहे हो, आपको ये वाला टारगेट चाहिए, आप यहां जाके बेचो. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर
to have some mentor on his entrepreneurship journey. So now I'm just coming back on the discussions or the checklist, which basically talking about how to start this entrepreneurship journey, और क्या क्या जरूरत है, कंपनी खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए, आइडिया कहाँ से लाएं. These are many questions coming from budding entrepreneurs from college or university people. So now the first thing, when you wanted to start something on your own, you have to pick a wonderful problem to give the solution. Okay, सबसे बेसिक चीज है, और उसी के अंदर से आप अपना आइडिया बिल्ड करते हो कि दिस इज माय आइडिया, दिस इज माय सॉल्यूशन ऑन विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्टार्टअप. This is really important for anybody to think of कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसे मैं सॉल्व करना चाहता हूँ. या तो मैं एक प्रोडक्ट बिल्ड करता हूँ जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होना हो, जो बहुत ही नेसेसिटी है लोगों के लिए, वो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, या मैं कोई सर्विस लाइन डिजाइन करता हूँ जो लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये चलने वाला है. तो दीज आर ऑल माय कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू क्लेम और आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय स्टार्टअप ऑन दिस सेम. तो पहली चीज, आप सबसे पहले एक वाइडर एंगल पे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो. इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एट अ वाइडर एंगल, you just go nearby the industries and check out the problems facing by them. Agar as a technical persons or technical college guys, you understand that there is a lots of nitty-gritty which is required in companies, factories, so on the technical front. तो आप लोग एक बार वहां जाके कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करो कि उन लोगों को किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, and then come back and do some analysis, do some research and find out the solution. Once you make that solution, the another important thing, अगर वो टेक्निकल है, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि उस आइडिया को कोई चुरा ना ले, because there are lots of key stakeholders, university students, startup, MSME, entrepreneur, they all are stakeholders. So अब हमने सबसे पहली चीज क्या करी, हमने एक सॉल्यूशन डिजाइन कर लिया कि ये सॉल्यूशन वर्केबल होगा. ठीक है, ये मुझे पता है, और बिकॉज मैंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ से मेरे अंदर वो आइडिया आ गया कि ये प्रॉब्लम अगर यहाँ पर है तो हो सकता है नेक्स्ट फैक्ट्री में भी यही हो, बिकॉज मैं प्रॉब्लम को एक वाइडर एंगल पे देख रहा हूँ कि हर जगह यही प्रॉब्लम फेस हो रही होगी. मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ चेंजेस इन लिटिल बिट इन माय सॉल्यूशंस, कस्टमाइज करने पड़ेंगे. इस सॉल्यूशन को आने के बाद इमीडिएटली मैंने उसके ऊपर अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइल किया. व्हाई आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू फाइल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिकॉज मेरे पास हरदम एक फियर रहता है. अभी भी आपके पास भी एक फियर आया था कि स्टील हो जाएगा मेरा आइडिया, बिकॉज आपको जाके ये सॉल्यूशन दोबारा प्रपोज कर रहा है उस इंडस्ट्री में, और आपको बिना बताए वो आपके सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर दें, देन आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर यू. इफ यू आर गोइंग टू डिस्क्लोज योर सॉल्यूशन, देन साइन सम काइंड ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट विद द बिग जायंट्स कि हम लोग एनडीए साइन करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे एनडीए साइन. And you just reach in a conference room where they have recorded all the things which you are going to present them, और थोड़े टाइम के बाद आपको आपका सॉल्यूशन बाहर नजर आता है, बट आपने तो उसके ऊपर कुछ सिक्योर ही नहीं किया था, एंड यू आर नॉट एबल टू क्लेम दैट. तो थोड़ी सी चीजें हैं जो ट्रिकी पार्ट होते हैं लीगैलिटी के कॉम्प्लेक्स पे, तो आप थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करके चले. इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस to file a provisional patent application, just to disclose the idea in patent office instead persons whom you are going to share. गवर्नमेंट फी 1600 रुपीस है. कोई स्टार्टअप फाइल करना चाहे, कोई इंडिविजुअल इन्वेंटर फाइल करना चाहे. दिस व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज आपको अपने आइडिया को एक बार सिक्योर करने के बाद यू आर गोइंग टू शेयर इट विद एनीबॉडी, एनी कंपनी, एनी इन्वेस्टर, और वेयर एवर यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर आइडिया. ठीक है, आपने अपना सॉल्यूशन डिजाइन कर दिया. सो दिस इज द थिंग वेयर यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई अ रियल आइडिया और रियल सॉल्यूशन ऑन विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और अपना स्टार्टअप शुरू करने के. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज यू ऑल पीपल आर इन कॉलेज, university, so you know you have to perform or do a market research. Why I'm saying market research, because whatever product, whatever the service you are going to build, you have to ensure that a proper diligence, or what you can say proper analysis should be done before launching these products in the market. Okay? Or it's not about only the products, might be in the service, whatsoever you are going to build. ठीक है, उसके ऊपर एक मार्केट रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब आप कॉलेज में होते हो, देयर आर गुड नंबर ऑफ टूल्स व्हिच हैज बीन मेंशन्ड इन द बुक्स, क्वांटिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल्स. व्हेनेवर यू जस्ट ओपन योर बुक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज,
There are lots of tools how to measure the success or do the market research. Maybe some kind of field survey we are going to do because we just wanted to collect the feedbacks. And आशीष जी अभी लास्ट सेशन में बता रहे थे आपको कि जरूरी नहीं है सब चीज सही होगी. There are lots of feedbacks जो आपके पास आएंगे. हो सकता है वो नेगेटिव फीडबैक्स आए आपके पास, और जब वो नेगेटिव फीडबैक आएंगे, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अडॉप्ट दोस नेगेटिव फीडबैक्स. ठीक है, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो हो सकता है माइट बी समथिंग वेंट रॉन्ग बिकॉज आइदर somebody is not able to collect those idea और solution नहीं समझ पा रहा है, इसलिए वो हाँ में हाँ भरे जा रहा है, और might be they are not interested. So you have to collect those feedbacks in your market research part, और उसके बाद आप एक thorough interpretation करेंगे. जब भी आपके पास ये सारा डेटा आ जाएगा, फीडबैक्स आ जाएंगे, आप एक इंटरप्रिटेशन करेंगे. और मार्केट रिसर्च में आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील. ऑलरेडी कोई सर्विस चल रही है, आपको लगता है कि आप compete कर पाओगे. सर देयर वुड बी अ टू काइंड ऑफ पीपल. एक धंधा चला रहा है, आप सब, मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करता हूँ. कोई भी पर्सन एक पान और पान शॉप भी ले सकते हो आप, और साथ में दूसरा पान शॉप भी, दोनों साथ में खोलते हैं ना, देयर इज अ गुड नंबर ऑफ सेल्स, अच्छी सेल्स आती है. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड एंड डू द कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस. ठीक है, कि क्या पता मेरे को एक इसके साथ में ही ज्वाइन करने से ही मेरा काम चलने लग जाए और मेरा सॉल्यूशन वर्केबल बन जाए. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दिस मार्केट रिसर्च पार्ट एट द फर्स्ट एंड और एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, देन जैसे ही हम बिकॉज इस मार्केट रिसर्च से हमें अपना कंज्यूमर बिहेवियर पता लग जाएगा, हमें अपने कॉम्पिटिटर्स पता लग जाएंगे, ऑलरेडी जो सॉल्यूशंस रनिंग इन द मार्केट हैं उनमें हम कहीं ना कहीं लूप होल्स और ट्विक अराउंड्स पता लग जाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप वेयर वी मीन टू से टेस्टिंग ऑफ योर सॉल्यूशन और टेस्टिंग ऑफ योर आइडिया. अभी तक आपने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, आपने अपना सॉल्यूशन भी बिल्ड कर लिया. नाउ यू जस्ट वांटेड टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ टेस्टिंग ऑफ योर सॉल्यूशन. अब इस टाइम आप एक कॉलेज में हैं, बहुत अच्छा टाइम है जहां आप अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं, टेकिंग सम काइंड ऑफ फीडबैक्स फ्रॉम योर कलीग्स, फ्रॉम पीयर्स और वेयरएवर माइट बी फ्रॉम योर टीचर्स एज वेल. और उनके साथ उनसे एक कॉम्युलेटिव फीडबैक लेने के बाद आप अपने टेस्टिंग को डिजाइन कर सकते हैं कि दिस हैज बीन डन. मे बी सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट that this I have built for what you can say, whatever the problem which is facing by the industry, and मैंने ये solution build किया है. Do you think this has been great going or something there is lacking? I am in my solution. Okay, so ये feedback लेके second stage clear करी, हमने testing कर ली अपनी. अब now we have to move on the third step, which I think we talked a lot about, intellectual property. अगर हमने suppose the solution is from a technical background, a BTech student can understand more, or they build a wonderful technology or identified a wonderful technology, then they go ahead and file the patent application on the same. Okay, I already told you this is a very what you can say, probably easy thing which they can do. Okay, file a patent. Second thing, if they are going to build something unique on the branding phrase, they can go ahead and file the trademark application, okay, on their individual name. It's not what is probably a difficult task that they should have a company, then they are eligible to file these kind of IPR. No, if a student wants to do, they can file the patent application, they can file the trademark application, because they just wanted to build a brand on the product or the services or the solution which they are going to build. Okay, if they have uniquely find some kind of coding or they wanted to build an app, they can just go ahead and file a copyright application on this. Fourth thing, when they do have a wonderful product and they think that looks of the product is really important to secure, go ahead and file the design application on the same. Why I'm saying on the third step? Because this intellectual property not only important for your startup, it is also important for entire life of a student or a university or an entrepreneur or an MSME, whatsoever you are going to start it. Okay, and this IP belongs to you. Whenever you want to sell it, you want to license it, you want to co-share it, you are easily you can easily do so. Okay, it becomes your property. It's your solution. Either it's a technical front, it's a brand name,
it's a coding part or the content part or a looks of the product, you can do it anyhow. Okay, on this intellectual property, once you file this intellectual property, you get credibility amongst your peers. Okay, you are ahead in the job interviews. Apart from that, this intellectual property gives you the option to expand your business in different countries without going there. Wanted to start a business in Korea, you are facing a language barrier there to start the business. But if you file your patent application in Korean market, easily identified a local partner, sell or give them those patent application rights. It's easy because they are more aware in this intellectual property thing. Once you file this intellectual property thing, then you can just move on the fourth step of identifying or co-founder, selection of your co-founders. It's your passion. Sometimes it's difficult for you to identify the similar kind of passionate people with you. कोई आपके साथ एज एन ज्वाइन करना चाहता है बट उसको उतनी ज़ील नहीं, बट उसको ये लगता है कि हाँ यार ये कुछ कर लेगा तो इसके साथ मैं भी कुछ कर लूंगा. So it's really important to identify those co-founders who is having some kind of complementary skill sets. ठीक है, I know the technical knowledge of my product or the service part. I know that how to build it, but I'm not familiar with the marketing part or the sales part. So I'm going to select that person who is good in the marketing or the sales part. If I'm not going to join him or he is going to join me as a co-founder, then I'm going to join as a team to him. Okay, so it's really important because हमने अभी तक कहीं पर भी कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करी, कुछ नहीं किया. अभी तक हमने खाली अपने आइडिया और अपनी जो भी हम सॉल्यूशन बिल्ड करने जा रहे हैं, कोई भी पैसा स्पेंड नहीं किया. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जस्ट गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी इन ऑल टर्म्स. लाइक आपके करियर में भी इंपॉर्टेंट है, आप अपनी जॉब से भी आते हो तब भी इंपॉर्टेंट है. तो इट्स नॉट अबाउट दैट यू आर स्पेंडिंग द मनी फॉर योर स्टार्टअप, बट अभी तक आपने स्पेंड नहीं किया, सब कुछ आपने फ्री करा. मार्केट रिसर्च आपने अपने कॉलेज में यूज कर लिया. आपको टीम को फाउंडर चाहिए था, यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई मे बी फ्रॉम योर पीयर्स कलीग्स, वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर आपको वहां भी नहीं मिलता, देन देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म. मेंटोर कार्ड इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर आप मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन मेरा राइट को फाउंडर हो सकता है, या आप मुझको मैच मेकिंग करवा दें कि मेरे को टेक्निकल इनसाइट्स चाहिए, मुझे मार्केटिंग इनसाइट्स चाहिए, मुझे एचआर रिसोर्सेज चाहिए. सो आई थिंक दैट ऑल अवेलेबल. सो आप अकॉर्डिंगली मूव करेंगे कि मुझे चाहिए क्या. जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं मेरे पास ये असेट्स है, मेरा सॉल्यूशन इज वन ऑफ माय एसेट. सेकंड आईपी, यस आई डू हैव दैट. मेरी टेक्निकल स्किल सेट्स, दैट इज माय एसेट्स. बट नाउ व्हाट नीड मोर टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया. अब मेरे को लॉन्च करना है मार्केट में, तो मेरे पास और क्या क्या चीजें होनी चाहिए. तो को फाउंडर हो गया या टीम मेंबर हो गया, आपने सेलेक्ट कर लिया. देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ ब्रांडिंग. जब भी हम बात करते हैं कि अभी तक भी मैंने कंपनी रजिस्टर नहीं करी है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, हमने सिर्फ अपने ब्रांड का नाम सेलेक्ट किया था, हमने प्रोडक्ट बनाया है, हमने सॉल्यूशन बना लिया है. अभी तक हम और कुछ नहीं कर रहे. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम पीओसी करना चाहते हैं, वो भी हम कॉलेज में कर सकते हैं. अदरवाइज हम इंडस्ट्री पीपल के बीच में जाके उस अपने कॉन्सेप्ट का प्रूफ ले सकते हैं कि हम लोगों ने ये बिल्ड किया है, कुछ आइडियाज ले सकते हैं. बट द नेक्स्ट स्टेप व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एज अ ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग तो जरूरी है. आपने एक ट्रेडमार्क ले लिया था, नाउ यू जस्ट वांटेड टू गेट सम काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी और सम काइंड ऑफ ट्रैक्शन. ठीक है, आपको ट्रैक्शन चाहिए थी कि मेरे पास लोग आप पे विश्वास करना शुरू करें, तो आपने एक ब्रांडिंग का एक टर्म यूज किया. अब यहाँ पर इस ब्रांडिंग को कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आपको पता है लास्ट टाइम टिकटॉक बंद हुआ था, व्हेन एवरीबॉडी सेल देयर ओन वीडियोस. हर एक अपने आप की एक वीडियो को सेल कर रहा था और प्रमोट कर रहा था ऑडियंसेस में. तो व्हाई डिडंट यू आर एबल टू मेक सम काइंड ऑफ वीडियोस ऑन योर प्रोडक्ट एंड make visible on lots of groups, might be on Facebook, Instagram. आप अपने products को वहां दिखा सकते हैं because you have already filed intellectual property, no issues with them. You are a sole owner of that product. It's wonderfully fine. You get some kind of traction there. आपके पास Facebook में आप जाएंगे तो वहां पर इतने ग्रुप्स बने हुए हैं और there would be a lots of people. I think more than 45,000, 50,000, 60,000 people आर देयर जो उन चीजों को चेक करते हैं कि आपने क्या बनाया, क्या इनोवेशन था आपके, ठीक है, क्या
कर रहे हैं, तो आप ना फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग कर सकते हो यहाँ पर, बिकॉज यू जस्ट वांटेड टू गेट सम काइंड ऑफ बीटा टेस्टिंग और अपने ब्रांड कुछ विजिबिलिटी दे रहे हो, कुछ ट्रैक्शन देना चाहते हो, ठीक है। बिकॉज अभी तक भी हम ये क्लियर नहीं हो पाए हैं कि हम जो स्टार्टअप करने जा रहे हैं क्या ये वर्थफुल होगा या नहीं होगा, ठीक है। वंस यू गेट सम काइंड ऑफ ट्रैक्शन, it's wonderfully fine, then we can move on the next part where we required some kind of workspace or incubator, because I think अभी आशीष जी भी डिस्कस कर रहे थे कि आपको नेक्स्ट चीज क्या चाहिए होती है, वर्क स्पेस। टू बिकॉज लास्ट ईयर वी ऑलरेडी सीन कोविड के टाइम पे जो पैंडेमिक सिचुएशन आई, सबको लगा कि इंफ्रा की जरूरत नहीं है, बट somehow I think 80 to 90% जिन businesses को जरूरत नहीं है, it's perfectly fine, but rest of the people required some office space just to get their customer, their client visit and have some kind of interaction with them. So it's really important to have some office addresses to get some credibility, ठीक है। आपको वो credibility कहाँ मिल जाती है? When you join incubators space, acceleration centers, or any kind of co-working space where you can take these spaces at very minimum cost, because you have already done lots of things till now, अपने आइडिया को टेस्ट कर चुके हो, लिटिल बिट ब्रांडिंग सिक्योर कर चुके हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर कर चुके हो, then you just need some space, or already I think there are lots of colleges who do have this incubation space, तो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी देख सकते हो वो स्पेस आपको मिल जाए, और गिव सम काइंड ऑफ एड्रेसेस। Once you get that workspace, then the next very important thing is mentor. ये चेकलिस्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब भी आप अपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को पूरा करने जा रहे होते हैं, ये सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सारे स्टेप्स, एक भी स्टेप को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। आपके पास ये ऑप्शन आती है कि आप इसे अभी करें या बाद में करें, दिस इज योर चॉइस, बट यू हैव टू डू इट एनी हाउ, ठीक है। द सेवेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज mentor. Why exactly mentor is going to join you at this stage? Because you have built a little bit traction. आपने अपने intellectual property secure कर ली, आपने testing कर ली, अब आपको गुरु चाहिए जो आपको help करे आपकी आगे की journey decide करने। And for that reason, I think MentorKart is a right platform where you can identify a right mentor. ठीक है, आपको किस डोमेन का मेंटोर चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेंटोर सेलेक्ट कर लेते हो और बाद में सोचते हो कि वो आपका को फाउंडर ही बन जाए, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पर आने लग जाती है एंटरप्रेन्योर्स को और फाउंडर्स को, ठीक है। मेंटोर इज अ डिफरेंट टर्म, और मेंटोर खाली आपको ज्ञान देता है। ज्ञान का मतलब है कि आपको गाइडेंस दे पाएगा, अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज शेयर कर पाएगा, बट ही इज नॉट द पर्सन हु कैन डू ऑल द स्टफ फॉर यू। करना आपको है, बिकॉज आपने ही अपने बिजनेस को आगे बनाना, अपना बिजनेस मॉडल बनाना है, ठीक है। आपको आपका मेंटोर, ठीक है, आपका गुरु बता सकता है कि आपने क्या क्या चीजें मिस ऑन करी हैं अपने ब्लूप्रिंट, अपने जो आप अपना बिजनेस मॉडल बना रहे हो उसमें आपने क्या चीजें मिस करी और क्या होना चाहिए। ये आपको मेंटर राइट गाइडेंस दे सकता है। बट हम यहाँ पर फाउंडर्स लोग बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं जहां वो मेंटोर को ही को फाउंडर समझने लग जाते हैं और वो कहते हैं सर आप ही बताओ कैसे करना है, कहाँ जाना है, किसके पास बात करनी है, मतलब हर चीज के लिए डिपेंड करने लग जाते हैं। और समटाइम्स founders not giving them a right value, this is also important. Mentor को एक right value देना might be their kind of some kind of revenue share or whatsoever. आप कोई भी terms decide कर सकते हो अपने mentor के साथ, because you have to make him interested in your solution, ठीक है। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे मेंटोर मिल जाएंगे जो इनिशियल स्टेज पे आपको हाँ कर देंगे, बट आप उनको वैल्यू नहीं करेंगे, वो आपके कॉन्सेप्ट के अंदर ध्यान नहीं देंगे और आपको नहीं राइट गाइडेंस दे पाएंगे। सो जब भी आप अपने मेंटोर को चूज करते हैं, आपको अपने टर्म्स क्लियर करो, आप उनको वैल्यू दो कि दिस इज द थिंग व्हिच वी आर ऑफर यू, ठीक है। बहुत सारी चीजें आ जाती है जो कंफ्लिक्टिंग इश्यूज हो जाते हैं, बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, बिकॉज यू आर right to start your businesses, right to think of your entrepreneurship,